Okay, it's Okay, fine, so sir, I think. yes, yes. So welcome you all in the eighth session of OSDP on real analysis. So I request Rohit sir to please start the session. Uh, Thank you, Sunil sir, giving me an opportunity to interact with the young minds. And good evening to all the students. So, hope you have a good week. Last week was good for you, and you have revised the things, right? So, without taking any more time, let's start. So, today we are going to see very interesting topic, that is sequence. But before going on to sequence directly, let us revise some four basic things which we have done in the previous lectures. And these things I have mentioned in my quiz also. आज सुबह एक क्विज शेयर किया गया था और उसमें आई थिंक 35 पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, राइट. आई हैव ए फुल डिटेल ऑफ देम. एंड एक्चुअली जो क्विज मेरे दिमाग में आता है वो ये होता है भी उस वो चीज़ें आपको डाली जाएं जिनका यूज़ होना है मेरे आज के लेक्चर में. सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स सी. ये क्विज के ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ एडिशन है कुछ और पॉइंट्स की. सो लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट if mod of x minus a is less than epsilon, so what will happen? X belongs to, yes, and can anybody quickly tell me, so what is this result? Yes, Aryan. Yes, sir. A minus epsilon Aryan to is A plus first. Yes. epsilon. Yeah, good. So it's a result. ये हमने रिजल्ट काफी बार स्टडी किया है एंड लास्ट टाइम भी हमने देखा था. इफ mod of x minus a is less than epsilon, if and only if x belongs to a minus epsilon, a plus epsilon. Now the second one, so this point is okay to all of you. Now the second point, for all real numbers x greater than 0, there is a natural number small n belongs to n such that, yes, can anybody fill the blank? Yes, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है. विवेक. Yes, Vivek. Sir, nx is greater than 1. And x is greater than 1. Right. So what is this? What is this Sir, property n we is call? x is greater than 1 by n. Okay, I am writing n is greater than 1 by x. It will be fine if I write this. Yes, sir. Okay, so what we call this thing? ये जो second point है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? Sir, AP2 AP3 की है सर ये. Yes, ये इसको हम रेड्डी सर ने बताया था. This is over Archimedean property number 3. Right? You take any positive number and we can find a natural number such that n is greater than 1 by x. Right? Now the third one is, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था. इसमें हमने कहा भी अगर हमारे पास a कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का एंड दैट इज सेड टू बी बाउंडेड if and only if there exists m positive such that for all x belongs to a, mod of x is less than equal to m. तो इसका प्रूफ भी हमने देखा था और इस चीज को जो है वो फिर से रिवाइज करवा रहे हैं. नेक्स्ट, द लास्ट वन इज mod of a minus b represents a distance between a and b. तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स की, सो इट इज नथिंग, इट्स द difference between a and b, right? So let's start with these points. Keep these 4 points in your mind and whenever we need these points, right, so we will recapitulate and we will use these points, right? So these are very simple points. Now let's move on to our today's topic जिसका नाम है sequence. अगर हम बात करें अपने डेली लाइफ की या बात करें साइंटिफिक लाइफ की, राइट, तो हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं वो सभी जो है एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन से हो रही हैं, राइट. लगता हमें
यही है, अभी ये एक नंबर है, पर वो जो नंबर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटेड नंबर। एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं अंडर रूट 2 की बात करूं, वी विल टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414, और समटाइम्स हम लेते हैं 1.41। अगर मैं अपनी ग्रेविटी की बात करूं, ये अर्थ की ग्रेविटी क्या है, दैट इज, सब बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑल दीज वैल्यूज, इसी तरह से मैं अगर सन के टेम्परेचर की बात करूंगा, दैट इज आल्सो सम नंबर। तो वो सब चीजें जो हैं दे आर अप्रोक्सीमेटेड, वो एस्टिमेशंस है हमारे पास। और एस्टिमेशन का रोल जो है वो सीक्वेंसेस में आज हम देखेंगे भी, हाउ सीक्वेंसेस हेल्प्स अस इन एस्टिमेटिंग द थिंग्स, राइट। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो आज हम देखेंगे। सो आई विल स्टार्ट। ये भी मैंने एक क्वेश्चन जो है पिछले क्विज में भी और इस क्विज में भी डिस्कस किया था, भी इफ आई हैव सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, दो आई एम नॉट डिफाइनिंग द सीक्वेंस, पर चलो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास एक नंबर्स का सीक्वेंस है। फर्स्ट नंबर इज 0.3, other number is 0.33, other number is 0.333, and so on, continuing in this way, I am getting 0.3333 n times. तो मेरा क्वेश्चन ये था भी, क्या आप मुझे कोई रियल नंबर बता सकते हैं जो इस सीक्वेंस के द्वारा अप्रोक्सीमेट हो रहा है? तो बड़े सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, एंड द आंसर इज 1/3। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं 0.3, 0.33, दे ऑल आर द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 1/3, राइट। दे ऑल आर द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 1/3। अगर मुझे कोई डॉक्टर कहे भी 1/3 mg आपको मेडिसिन लेनी है, तो बीइंग स्टडिंग मैथमेटिक्स, मेरे दिमाग में आएगा यार भी कौन सी लूं, whether I take approximation 0.3 or I take 0.33 or I take 0.333, because these all are the approximation of 1/3, right? तो एक बात तो आ गई भी, हमने सीक्वेंस के द्वारा अपने रियल नंबर को अप्रोक्सीमेट करना है। और कौन सी अप्रोक्सीमेशन लेनी है, कौन सी अप्रोक्सीमेशन हमें कंसीडर करनी है, वो हमें बताएगा लेवल ऑफ एक्यूरेसी। वो हमें बताएगा भी हमें किस एक्यूरेसी तक जो है इसको कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप चीज ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा भी आपको समझ आई कि नहीं। एंड जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये चीज जो है आपको, आई होप भी ये चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, मेरे पास ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, और मैक्सिमम बच्चों ने ये बताया भी ये सीक्वेंस जो है इस नंबर को अप्रोक्सीमेट कर रहा है। नाउ द सेकेंड थिंग कम्स इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। भी हम एक्यूरेसी की लेवल की बात करते हैं। सपोज कोई मुझे कहता है जी लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो 1/10 से कम होनी चाहिए, राइट। 1/10 से ये लेवल ऑफ एक्यूरेसी कम होनी चाहिए। सो विच नंबर शुड आई टेक कि जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो 1/10 से कम आए? कौन सा नंबर मैं सेलेक्ट करूं कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है और ये जो 1/3 है, इनका जो एरर है, जो डिफरेंस है, वो 1/10 से कम आए? तो लेट्स चेक फॉर 0.3। अगर मैं 0.3 और 1/3 का डिफरेंस देखूं, बिकॉज एस्टिमेशन इज समथिंग नियर टू, राइट। तो मैं अगर इनका डिफरेंस देखूं एंड आई विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, सो व्हाट आई विल गेट 3/10 minus 1/3. These are the simple mathematical calculation. So I will get, I think it's 339 and 10. So I will get 1/30. So of course, what I am getting 1/30, and it is less than 1/10. So I can take this number 0.33 as approximation of 1/3 if my level of accuracy is 1/10, right? Can we take any other number from this sequence so that my level of accuracy should be less than 1/10? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मुझे किसी ने कहा, देखो ये सारी जो है, एक बार फिर से बता रहा हूं,
ये सारे जो नंबर्स हैं दे आर द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 1/3। और अब मुझे एक इंसान कह रहा है भी लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो 1/10 होनी चाहिए। कहने का मतलब भी जो आप अप्रोक्सीमेशन लेंगे और जो मेरा नंबर है 1/3, इनका जो डिफरेंस है वो 1/10 से कम है। सो आई एम टेकिंग 0.3 और मैंने इसका डिफरेंस 1/3 के साथ किया। सिंपल कैलकुलेशन से इट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 1/10। क्या आप मुझे कोई और नंबर बता सकते हैं जिसका डिफरेंस 1/3 से करूं और वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी से कम आए? यस, बता सकते हैं? इनमें से कोई एक और नंबर बता सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। यस, आर्यन अगेन। यस सर। सर जी इवन आर्यन, पॉइंट बोलिए बेटा। थ्री थ्री लेंगे हम। यस सर। यस, सर इवन 0.33 वेरी गुड, लेंगे तो उसका डिफरेंस 1/300 आएगा, विच इज लेस देन 1/10। वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी द ऑब्जर्व द थिंग्स, जैसे कि आर्यन ने ऑब्जर्व किया है, इफ आई टेक द डिफरेंस ऑफ 0.33 with 1/3, I will get 1/300. These are the simple calculation, you can do it very easily, right? So I will get 1/300. So it is also less than 1/10. So this is also the approximation of 1/3 if I am taking level of accuracy 1/10. And in the same way, if you take any number from this sequence, right, and take the estimation from 1/3, you take the difference between 1/3, you will see that level of accuracy will always be greater than that difference. That means each and every number is an approximation of 1/3 if I select my level of accuracy 1/10. राइट? अगर आप कोई भी नंबर लेंगे उसका डिफरेंस 1/3 के साथ करेंगे, देन व्हाट यू विल फाइंड दैट द डिफरेंस इज लेस देन 1/10. So I can say that my each and every number is an approximation to 1/3. अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है, so please raise your hand quickly. You can take 5 to 10 seconds. Okay, so this is very um, important thing, right? Which I am discussing. अगर आपको ये बात समझ में आई है, then I will proceed further. Otherwise, I will explain you again. Okay. So Sunil sir, is it how many students are raising their hands, sir? Please. Sir, more than 25 students. Even its number is increasing. Okay. It means Okay, sir. the concept is Okay, clear it's to enough. everyone. So yeah. So students, ये जो चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसका 30-40% भी लेकर जाएंगे, राइट, यू विल लर्न मैनी गुड थिंग्स। तो यहाँ पर मैंने देखा किसी ने कहा मुझे, आर्यन ने कहा या किसी और ने कहा भी भैया लेवल ऑफ एक्यूरेसी 1/10 होनी चाहिए, तो बताओ कौन सी आप अप्रोक्सीमेशन लोगे। तो मैंने देखा भी हर एक नंबर का डिफरेंस जो है वो 1/10 से कम आ रहा है। सो ईच नंबर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इफ आई एम टेकिंग लेवल ऑफ एक्यूरेसी 1/10. Now what about if somebody says that take level of accuracy as 1/100? Now the level of accuracy is changing. Level of accuracy is changing. So can you guess a number from this such that the difference between the number and 1/3 is less than 1/100 now? Yes. Can you find a number? Okay, Sahil Kumar. सर 0.33। Sahil Kumar. सर 0.33. 0.33। Why? जी 0.33। अब देखो, अगर मैं 0.3 कंसीडर करूंगा, सो व्हाट इट विल कम्स आउट टू बी, इट इज 1/30. सो 1/30 is not less than 1/100. So I will exclude this point, right? But if I take 0.33, right? If I take 0.33, then of course the difference comes out to be 1/300, and 1/300 is less than 1/100. So I can take this number as my an approximation. And even you see,
the number afterwards it, जितने भी number इसके बाद आएंगे, they also give me the level of accuracy less than 1 by, if I take 1 by 100. If I take the difference of 0.33 with 1 by 3, so what I will get? I will get 1 by 3000. Now you can understand the calculation. So this is also 1 by 100, right? So if I take the level of accuracy as 1 by 100, what we are observing, that this first number is excluding, 0.3 is excluding, but you see that after this point onwards, 0.33 onwards, all the numbers are approximation of 1 by 3. If I am taking level of accuracy 1 by 100, right? So this is the idea behind the defining a sequence and the other things which we will cover in this today's lecture. So now I am going to define formally what is sequence is, and you just keep these things in in Rohit your sir, mind. I will come to these things again. Yes, sir. Navneet write one question in the chat box. Yes, Navneet, can you ask what's your question? Navneet, Ji Navneet. he's writing 0.03. So 0.03. Yes. What is it, sir? okay. Sir, he write, sir, my internet. Okay. Navneet, can you write your question? What is your concern, beta? You can write your question in the chat box. Otherwise, Rohit sir, you can continue. Okay. So students, up to now हमने देखा भी ये numbers हैं, and thus this is a sequence of number, and this sequence of number is approximating some real number, and this real number is 1 by 3. Next thing comes out to be the level of accuracy. Somebody is saying that level of accuracy should be 1 by 10. So I can take any numbers, right? Even from first number onwards, all number are good approximation up to this level of accuracy. If I take level of accuracy 1 by 100, then all the numbers excluding first number are the good approximation to this 1 by 3. So keep this thing in mind. Now I will define the formal definition of sequence, what sequence is, and then I will come to this example again, right? So sequence, if we have any non-empty set, suppose X is any non-empty set, so sequence is defined as a function. It's basically a function which take us from natural number to overset X. So its domain should be natural number and codomain is X. Then any function, we call it as a sequence. So suppose the values which sequence can take, it should be f of 1, right? It is like this, f of 2, f of 3, right? And all these values are going to my X. So this type of function we called as a sequence. Sequence we generally denote f of 1 as x of 1, right? X of 2. We write it like this, x of 3 and so on. They are continuing like this. And in short form, we will write it as like this, xn. So xn is a sequence, right? So it's a sequence. It contains, it is a ordered set of infinite tuples, right? I can like write like this, it is x1, x2, x3 and so on. It's continuing. So this is how we define a sequence. Sequence is a function whose domain is set of natural number and it is going to overset X. X is a non-empty set. Now let us see some example, right? Examples of a sequence. Suppose I have a function and the function is going from n to
the nth prime. The nth prime. I will say it as Pn. Right? So we have a sequence. Right? So it's take me to n to the nth prime. Right? So what should be its x1? Yes. Can anybody will tell me what should be the first element? What should be the first prime number? Yes, Ashish 21MA037. Sir, 2. 2. So our first element is 2. What should be x2? Yes, Ashish, continue. Sir, 5. 3, 5. 3. What is over x3? Sir, 5. 5. And what is over x100? Can you tell me x100? Yes, Ashish. No, sir. Okay, don't think. I also don't know. But it should be some prime number. Okay. Yes, sir. So x100 should also be some prime number. So this is an example of a sequence. Let us see second example. Now I am defining a sequence from which is taking n to even prime number. Even prime number. Now my sequence is taking me from n to even prime number. So what should be x1? Yes, Ashish again. Sir, 2. 2. Okay, Sahil, can you tell me what is x100? सर नहीं What? सर नहीं बता सकता Why? सर See इसके the बाद कोई sequence. क्योंकि प्राइम नंबर नहीं आएगा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आएगा नहीं आएगा. What should be x2? ये एक सीक्वेंस सर है जो मुझे n से इवन प्राइम नंबर में लेके जा रहा है. So I am getting x1 as 2. So सर what should be x2 भी x2? नहीं आएगा सर 2 x2? के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है Then what should be x2? सर सर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा 5 I will take any n. So what I am getting even prime number always. So what is x2? Yes, Rohit Thakur. क्या होगा बेटा x2? Sir, 2 again. It's 2 again because the sequence is defined like this, that it is taking me from n to even prime number. And what is even prime number? That is only one number. So what is x100, Rohit? Sir, 2. It is also 2. What is x1000? Sir, again 2. Again 2. Right. So students, ये जो सीक्वेंस है ये हमें डिफाइन इस तरह से है, ये हमें नेचुरल नंबर से इवन प्राइम नंबर में लेके जा रहा है, एंड ओवर इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2, राइट? So whenever I put x1, x2, x3, x4 or whatever the value of natural number, I am getting always 2. So this type of sequence, we are getting a constant value, right? So this type of sequence we called as a constant sequence. We called it as a constant sequence. If I have any real number c, right, we can define like this. If I take any real number c and I will get the answer of our sequence always c for all n belongs to natural number, then this type of sequence is called as constant sequence. Is it okay? So this is our second example. One more thing, we write the notation of sequence as this, like this, open braces and within that xn, right? Try not to write like this. Sometimes we write the sequence as in curly brackets. So don't write like this because it represents a set, right?
So we will write our sequence in open braces. This is the representation of our sequence. Okay. Now let us see the third example. Any question up to now? यहाँ तक कोई क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल्स किए उसमें कोई आपको डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो? Okay. So let us, before going on to a third example, let us draw the diagram of this sequence. इस sequence की हम diagram draw करते हैं, right? Suppose I have natural number along x-axis and I have my value of a sequence along y-axis. So this is over y and this is over x. So here we have 1, here I have 2, here I have 3, here I have 4, here I have 5, and keep on going. Now I am going to draw this diagram of this second number example. Yes. कौन बताएगा मुझे मैं कहाँ पॉइंट लगाऊं यहाँ पर y एक्सिस पर? Yes, be quick. आर्यन हमेशा. Yes. This is very simple question. All of you must know. At least we need more than 20 response. ये कांस्टेंट सीक्वेंस है और मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास Yes. जो कांस्टेंट आंसर आ रहा है दैट इज 2. Yes, Jyoti. सर y एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ सेकंड नंबर पर सर सेकंड. Okay. So for x is equal to 1, I am getting 2, right? यस सर. Jyoti? Okay. So I can put a point here. This is 1, 2. What should be the next point? Sir, x equal to 2, then we get 2 again. So what is the ordered pair you are getting? 2, 2, right? Right, Jyoti? ज्योति सुन पा रहे हैं बेटा? Yes. What is the next point? Yes, Hurry sir. up. It's 3, 2. Next is Next 4 2. 4, 2, 5, 2, 6, 2. Right? So I will 5 get 2 like this. 6 2. So what we are getting? Straight line parallel Okay. to x So axis. Jyoti, if you Jyoti, is see, it a straight line? we will Is not it get a straight straight line? line. Yeah. Yeah, Sunil sir, please carry. Jyoti, is it a straight line? क्या ये straight line होगी? Be quick. If you know the, Yes, sir. is it a straight line? Okay, Preeti. Preeti, is it a straight line? Yes, sir. How can you How say many it's a students think? कितने बच्चे बोलते हैं अभी ये स्ट्रेट लाइन है? प्रीति, प्रिया, नरेंद्र गुलेरिया, साहिल, नरेश. Raise your hand if you say that it is a straight line. Okay, sir, I think you should clarify this. So Isha, Sandeep Kaur. Sandeep. Yes, sir. Sandeep,
Is it a straight line? You raise your hand. Okay. Yes, sir. So Yes, sir. Yes, sir. can you tell me what are the element in domain? डोमेन के क्या क्या एलिमेंट है? Is 1.1 belongs to domain? Sir, yes, sir. Domain is a set of natural number, na? So is 1.1 Sir, belongs? Okay, think about this, right? Yes, Ashish. Okay. Yes, sir. Is it a straight line? No, sir. So can you explain? सर हम डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं Yes. सर, तो domain अगर हम Yes, सर Ashish, इसकी carry on. रेंज 2 है सर, अगर हम स्ट्रेट लाइन लेंगे तो ये 1.1 पे भी 2 ही होगा. But is 1.1 belongs to natural number? नो सर. हाँ, तो 1.1 डोमेन में है ही नहीं है, फिर क्यों लेंगे वो? तब 1 आशा, पे सर 2 है सर, 2 पे. okay. आशा देवी, यस सर. आशा ये स्ट्रेट लाइन होगा? यस सर. स्ट्रेट लाइन कैसे? फिर तो सारे पॉइंट आएंगे ना. हम तो किसी भी पॉइंट के 1 से लेके आगे कोई भी पॉइंट लें, उसकी हमें इमेज मिल रही है. यस सर. व्हाट इज द इमेज ऑफ 1.1? सर उसकी 2 ही आ रही है. नहीं, 1.1 आपके डोमेन क्या है? सीक्वेंस की सर ने डोमेन क्या डिफाइन की है? सर जैसे 1 2 3 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. हाँ, तो क्या 1.1 नेचुरल नंबर होता है? नो सर. तो फिर 1.1 की इमेज क्या होगी? सर उसकी इमेज नहीं होगी. हाँ, तो फिर 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं जो जिनकी इमेज आपको मिल रही है? सब 1 और 2 की 2 है और किसी की भी नहीं है. बीच में इतने पॉइंट कैसे हम? अगर मुझे 1.5 की इमेज देखनी हो तो 1.5 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा डोमेन में, तो मैं उसकी इमेज कैसे निकालूंगा? यस सर. यस सर. तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे हर पॉइंट उसका डोमेन में होना चाहिए ना. यस सर. तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? नो सर. 1 के बाद देखो पॉइंट आपको डोमेन में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. आउटपुट आपको जो इसे जो इमेज मिल रही है 1 की, वो 2 है. बट उसके बाद 1 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी आप इमेज 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, बट बिटवीन 1 एंड 2 we have no number in the domain, so we cannot find the domain of any element between 1 to 2. Is it clear to everyone or still you have doubt? If it's clear, then please click on raise hand. स्ट्रेट लाइन होने के लिए आपको, अगर ये हमने इंटरवल दिया होता कि क्लोज इंटरवल 1 to 2 या ओपन इंटरवल 1 to 2 और उसकी इमेज 2 आती, देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन. बट यहाँ पर पॉइंट्स है 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 की 2, 4 की इमेज 2 एंड सो ऑन. ओके, सो मोर देन 25 they click on raise hand option. So Rohit sir, you can continue now. Okay, sir. Okay, so students, this is not a straight line because the something is missing. If you see, there are gaps in between the points, right? So clearly this is not a, don't take it as a straight line. You see the points and join these, don't take it as.
After this point, we are getting 2, 2. After this point, we are getting 3, 2. There is no point we are getting in between these two. That's why this is not a straight line. So this is a discrete points basically. One more thing which I want to rectify, that here constant sequence I have written before, it's for every, but it's not for every, it's there exists. If there exists a point C belongs to R such that xn is equal to C for all n belongs to natural number, then we say that a sequence is a constant sequence. Now let us see one more example. Suppose I have a sequence and nth term is the nth term. I will write the, if I am writing xn as a sequence, then its nth term is represented by xn, right? So this is the nth term of sequence, nth term. So I am defining that xn is remainder. So I am defining the sequence that xn is the remainder when n is divisible by 5. When n is divisible by 5. जब हम n को 5 से डिविजिबल करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज माय xn, वो मेरा सीक्वेंस होगा, राइट? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज x1? x1 हमारा वो आंसर आएगा. यस आर्यन बताइए व्हाट इज x1? 1. It's 1. So if I divide 1 with 5, I will get a remainder as 1 again. Right? It's good. What is x2? Yes. Who will tell me x2? Rohit. What is x2? It's 2. Right. What is x3? Yes, Sahil. Sir, 3. 3. What is x4? Yes, raise your hand. Vivek. Yes, Namita. Sir, 4. It's 4. Yes. What is x5? Yes, Sandeep Kaur. So 5. It's 5. If I divide 5 with 5, what should be the remainder? So 0. Yes. Be active, Sandeep. Don't take it lightly. If it is writing 1, 2, 3, 4, then it's come out to be 5. No. If I divide 5 with 5, I will get remainder 0, right? So what is x6? Yes, Sandeep. Sandeep, So hurry up. So 1. 1, very good. Yeah. Now, next, Narinder Guleria. What is x7? What is x7? Narinder Guleria. 2. Sir, Very 2. good. So if we continuing like this, yeah. Preeti Chauhan, tell me what is x100? So 0. 0. Yes. Because 100 divisible by 5, remainders come out to be 0. So can anybody tell me, Asha Devi, you tell me, what are the points we are getting in sequence? हमें sequence में क्या क्या points दिख रहे हैं? First So term, 1, 1. Second 2, term, 2, 3, 4, 0. okay. Next. उससे आगे Sir, 0 के आगे सर फिर से 1, 2, मतलब 3, 4, 0 वही वही आएंगे. Then say it. Say it, hurry up. 1, 2, 3, 4, 0. इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस है वो चल रहा है, राइट? सो दिस इज ओवर सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. So can anybody help me to draw the graph of this sequence? कोई हेल्प करेगा मेरी? कौन करेगा? मैं आई एम लोवरिंग द हैंड्स नाउ. कौन करेगा मेरी हेल्प? Yes, Vaishali. Vaishali. जल्दी से, बिकॉज आज हमें और भी चीजें थोड़ी देखनी है, तो आप थोड़ा
एक्टिव रहें और जल्दी से आंसर जो है वो मुझे देते रहें। आर्यन बताओ बेटा। Yes, sir. यस, Sir, व्हाट इज yes. First, sir, पॉइंट? like in x-axis, the domain is natural numbers. So at 1, we या get the value of y is 1. So point must be ओके at 1 at 1. Then ओके ओके, सो similarly दिस इज वन वन। at 2, it is also 2. And then 3 is going to be point at 3. Then for 4, it is 4. And for 5, it is going to be at 0. ओके, यस, अगेन। Again, sir, it is going to be at 1 and then 2, So then it's 3. it will move like this, right? Yes, sir. तो स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ग्राफ जो है वो जैसे आर्यन ने बताया, सबको क्लियर हो गया? ओके, तो कितने लोग कहते हैं हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी? कितने लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें? जितने जो लोग कहते हैं भी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी वो अपना हाथ खड़ा रखें, और जो कहते हैं जी नहीं हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, दे कैन लोअर देयर हैंड। नमिता, प्रियंका, प्रियंका 21MA061, तो ये कह रहे हैं अभी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट? नमिता, नमिता, Yes, sir. मिलेगी स्ट्रेट लाइन बेटा? Yes, sir. क्या ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है? जी नमिता, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही बिकॉज इट्स ए डिस्क्रीट ग्राफ। यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो फर्स्ट हमारा आ रहा है 1 1, फिर आ रहा है 2 2, फिर आ रहा है 3 3, फिर आ रहा है 4 4, देन 5 0 6 1 7 2 8 3, इस तरह से आ रहा है। ओके नमिता, Yes, sir. now let us see one more example. Okay, lower your hand now. Now let us see one more example. I have a sequence xn which is equal to whose nth term is given by -1 raised to power n. तो क्या सीक्वेंस होगा ये? जल्दी से बताएं मुझे प्लीज, क्या सीक्वेंस होगा ये? यस नरेंद्र गुलेरिया, जल्दी से। -1 1 -1 1 up to so on. -1, ओके। कैन यू ड्रॉ द ग्राफ? इसका ग्राफ बना सकते हैं नरेंद्र गुलेरिया? ग्राफ बनाएंगे? जी नरेंद्र, Yes, sir. बताओ फिर कैसे बनाएं? फर्स्ट आई विल टेक नेचुरल नंबर अलोंग 1 एक्स एक्सिस। आपने मुझे बताना है ये वाई एक्सिस पर मैं कहाँ कहाँ पॉइंट लूं, बताओ। 1 पे 1 in positive y axis negative. and is on another. Now tell me the ordered pair I am getting. Hurry up. First ordered pair, जब 1 पुट करेंगे क्या आएगा? -1. -1, so it will 1 -1, right? So this is the point. Yes, Next sir. is 2 1 2 1, okay. Next is 3 -1 -1, 4 1 1, 5 -1, and 6 1. So -1 for odd numbers I am 1. getting -1, right? So is this topic of the definition of sequence is clear to you? अगर आपको क्लियर है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। अगर कोई डाउट है तो माइक अनम्यूट करके बोलिए। ओके, तो एक सीक्वेंस हम ऊपर भी तो डिस्कस कर रहे हैं। अभी शुरुआत में हमने डिस्कस किया x1 हम मान के चलते हैं 0.3, x2 हम मान के चलते हैं 0.33, राइट?
x3 हम मान के चलते हैं 0.333। इसी तरह से चलते जाएंगे तो मेरे पास xn क्या आएगा, दिस इज 0.3333, हाउ मेनी टाइम्स, इट्स n टाइम्स, n टाइम्स, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने शुरुआत में देखा भी अगर मुझे, अब यहाँ बात आ रही है लेवल ऑफ एक्यूरेसी की, और इसके साथ ही हम अपनी अगली डेफिनेशन देखेंगे। तो लेवल ऑफ एक्यूरेसी अगर मुझे कहता है बी 1/10 लो, सो व्हाट आई एम गेटिंग, भी मैं x1 के ऑनवर्ड्स जितने भी पॉइंट्स हैं, दे ऑल आर द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 1/3 माई रियल नंबर x। ये सारे मेरे रियल नंबर के अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। जब मैं लेवल ऑफ एक्यूरेसी लेता हूं 1/10, दैट मीन्स ऑल नंबर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैं x1 लूं चाहे x2 लूं चाहे x3 लूं, सब जो है all my xn, their difference from 1/3 is less than 1/10 if my level of accuracy is 1/10। ये चीज क्लियर है, ये हमने डिस्कस किया। अगर मैं x1 लूंगा 0.3, so its difference with 1/3 is less than 1/10 because I am taking level of accuracy 1/10। That means I can say whenever n is greater than equal to 1, mod of xn minus 1/3 is less than 1/10। Is it okay to all of you? ये चीज जो मैंने लिखी है सबको क्लियर है बच्चों? रेज योर हैंड, हरी अप। ऊपर हमने डिस्कस किया है इसको, दिस इज माय सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, बड़े प्यारे नंबर्स हैं ये, राइट। ये नंबर हमें काफी जगह पर देखने को मिलता है, इनफैक्ट बड़े सारे इस तरह के नंबर्स हैं। अगर मैं अंडर रूट 2 की बात करूं, वो हमें काफी जगह देखने को मिलता है। पाई की बात करें 3.14, राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। फिर मैंने क्या कहा, मैंने अपने लेवल ऑफ एक्यूरेसी चेंज किया। लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या रखा हर्षित? फिर हमने लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या लिया हर्षित? सर 1/100। हर्षित बताएंगे? उसके बाद हमने लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या लिया था बेटा 1/10 के बाद? 1/100। आवाज बेटा कम आ रही है आपकी। सर 1/100। 1/100, यस, थोड़ा सा सुनाई दिया। सो इट इज 1/100। तो जब हमने 1/100 लेवल ऑफ एक्यूरेसी लिया, और ये लेवल ऑफ एक्यूरेसी कौन बोल रहा है? कोई आर्बिट्रेरी बंदा बोल रहा है, वो कुछ भी बोल सकता है, राइट। जरूरी नहीं है 1/10 ले या 1/कुछ, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। भी उस बंदे ने कहा पहले लेवल ऑफ एक्यूरेसी लो 1/10, फिर किसी और ने कहा अब लेवल ऑफ एक्यूरेसी लो 1/100। सो व्हाट वाज आई एम गेटिंग, मैं देख रहा था अभी पहला नंबर एक्सक्लूड हो गया, उसके बाद जितने भी नंबर हैं दे ऑल आर द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 1/3। दैट मीन्स xn minus 1/3 mod is less than 1/100 जब n 2 या 2 से बड़ा है, राइट। इज इट ओके? अब अगर कोई कहता है भी, अब इसी को हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। मान लो मेरे को कोई कहता है जी लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो 10⁵ होना चाहिए, 10⁵ होना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, किस वैल्यू के बाद जो है, किस वैल्यू के बाद 10⁵, दिस इज माय 10⁵2, दिस इज माय 10⁵1। सो किस वैल्यू के बाद मैं कह सकता हूं भी आई एम गेटिंग गुड अप्रोक्सीमेशन? यस विवेक 21 MA 035। Sir, when n is greater than equal to 5. वेरी गुड। सो आई एम गेटिंग, जब n 5 से बड़ा होगा, सो आई एम गेटिंग द गुड अप्रोक्सीमेशन, राइट। तो यहां से जो हमारी डेफिनेशन है वो कन्वर्जेंस की बात शुरू होती है, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द कन्वर्जेंस
of a sequence keeping these things in mind, right? Whatever my level of accuracy is, कोई भी मुझे level of accuracy दे दे, मान लो कोई कहता है जी एप्सिलॉन level of accuracy है, right? कोई मुझे कहता है भी level of accuracy है एप्सिलॉन, that can be 10 raised to power 5, 10 raised to power 2 or 10 raised to power 1 or some number that is positive. So what I am able to see, मैं क्या देख रहा हूं भी मुझे एक नंबर मिल रहा है, I am getting some number, right? I am getting some number, and after that number I am getting all these values as a good approximation of 1 by 3, all these values, right? तो मैं ये कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं भी मुझे कोई भी लेवल ऑफ एक्यूरेसी दे दी जाए, मैं इस केस में एक नंबर ढूंढ सकता हूं, राइट? जिसमें जो हमारे उस नंबर के बाद जो भी हमारी अप्रोक्सीमेशंस होंगी वो 1/3 की गुड अप्रोक्सीमेशन. सो this example lead us to the definition of convergence of a sequence. Convergence, it's very beautiful definition and very useful definition in analysis. Convergence of sequence. So I will write the definition and then I will correlate the definition with my example, and then I will tell you many more examples. So suppose I have a sequence xn, right? And we have a xn be a real sequence, right? Real sequence. So what is sequence? हमने sequence define किया था, that the function from set of natural number to x. X is over non-empty. If I take x is equal to r, then we called it as a real sequence, right? So I am taking xn, a real sequence, and we say that over xn, that means sequence converges to x belongs to real number. हमारा sequence converge कर रहा है if for any epsilon positive. What is epsilon? My level of accuracy. What should I get? I can find a natural number. There exists a natural number n. There exists a natural number capital N, such that क्या होगा? Such that for all k greater than equal to n, or for all n greater than equal to n, if I take any n greater than equal to n, so what we have? We have mod of xn minus x less than epsilon. We have mod of xn minus x less than epsilon. So see this definition for 15 seconds. This is the convergence definition of convergence of sequence. I'm saying my sequence will converge to a real number x if for any epsilon positive, कोई भी मुझे epsilon positive मिले, that means कोई भी मुझे कहे भी ये level of accuracy होनी चाहिए. So what can I do? I can find a natural number n, and after that natural number, the difference between the approximation and the number should be less than epsilon, right? Now how can we write this expression? ये expression हम किस तरह से लिख सकते हैं? हाँ जी, जो आज शुरू में points हमने discuss किए, 4 points discuss किए, अब उनकी बात शुरू होनी होगी. Yes, रोहित ठाकुर, very good. बताओ बेटा. So minus epsilon is less than x and minus x less than epsilon.
Okay. So what we have discussed today, that xn should belongs to, how can we write this? Xn should belong to x minus epsilon, and x plus epsilon. x plus epsilon, right? So we can Yes. write like this also. So once again, the definition I am repeating. मेरे पास एक sequence है xn and I will say it converges to x. You give me any epsilon. आप मुझे कोई भी epsilon दे दो. That means level of accuracy. If I am able to find a natural number n such that for all n greater than equal to n, all values of xn should lies in this interval. After that n, all values of my sequence should lies in this interval. So if I take x, suppose x is there, and if I take x minus epsilon as there, right? This is my x plus epsilon. Epsilon is over level of accuracy. So what is happening? That suppose I have x1 here, x2 here, x3 here, x4 here, right? So x5 is here. I don't know where x, but x7 is here, and my xn is here. So what is happening? After n, all my values of sequence should lies in the interval x minus epsilon and x plus epsilon. How many of you got this definition? How many of you got this definition? Think before raising your hand. Okay, so 8 people raised their hand. Okay, I am revising this again. तो मैं कह रहा हूँ भी मेरा एक सीक्वेंस जो है वो x को कन्वर्ज कर रहा है. अगर मुझे कोई भी एप्सिलॉन दे दिया जाए, सी आई एम टेकिंग x, right? So if I take the interval x minus epsilon and x plus epsilon, कुछ समय के बाद, right? कुछ किस समय के बाद, इस पॉइंट के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स अगर मुझे इस नेबरहुड में नजर आएंगी, then I will say that my sequence is converges to x, right? कोई इस डेफिनेशन को क्वांटिफायर की फॉर्म में मेरी हेल्प करे लिखवाने में? Anybody help me to write this definition in terms of quantifier? Yes, I am lowering the hand now. Yes, Namita, बोलिए please. Namita, I will say that my sequence xn is convergent. कब? Yes, Aryan, बोलिए. नमिता चले गए छोड़ के, बोलिए. Yes, sir. For given any epsilon greater than 0, So which quantifier should I use? for all, given any. Yeah, for all epsilon greater than Epsilon 0. greater than 0. There is a capital N in set of natural numbers. There exist Tell me the existential quantifier. quantity. There exists. Yeah, n belongs Capital N to in set natural of, number. yes, sir. Yeah, Such that such that. mode of xn minus x. Go slowly. Go slowly. What will happen? I Yes, sir. am Such, getting natural number, and what happened for this natural number? yes, sir. We get mode of xn minus x is less than No, epsilon no, for no, no. given any. Wait, Aryan. Yes, Jyoti. given any, sir, इससे आगे given any n is greater than equal to n, small n greater than equal to n, Greater than equal to n. Yes.
what will happen? So what is the definition? For any epsilon positive, you give me any epsilon positive, there exists a natural number n, there exists a natural number n, such that for all n greater than equal to n, if I take any natural number greater than that n, what will happen? Yes, Aryan? Mod of x Mod of xn minus x is, Less than epsilon. yes, Preeti, Less than epsilon. less than epsilon. So this is our definition in terms of quantify, right? You give me any epsilon, if I am able to find some natural number capital N, then what happen? After that natural number, each term of sequence should come in the interval x minus epsilon, x plus epsilon, or I can say that mod of xn minus x is less than epsilon. I can write this last thing as xn belongs to x minus epsilon and x plus epsilon. Is it okay to all of you? Yes. Is it okay to all of you? Yes. Rimanshi. रिमांशी. yes sir यस साहिल कुमार. बेटा ठीक है, ये रिमांशी Yes, sir. आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके. साहिल आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So I am saying that my sequence is convergent, that to some point, right? If you give me any epsilon positive, I can find a natural number n such that after that n, all the values of sequence should lies in the interval x minus epsilon and x plus epsilon. It's same saying like भी हमारा जो कोर्स है वो 5 बजे शुरू होता है, राइट? जो हमारा कोर्स है वो 5 बजे शुरू हो रहा है हर सैटरडे को 5 बजे. अगर मैं 5 बजे की नेबरहुड में देखूं, दैट इज 4:59 और 4:50 और 5:05, वट वी आर ऑब्जर्विंग, हर कैंडिडेट जो है, हर पार्टिसिपेंट जो है, वो अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, अपने मीटिंग की तरफ कन्वर्ज कर रहा है. वी कैन से लाइक दिस, एवरीबॉडी इज कन्वर्जिंग in the neighborhood of 5. Everybody is coming in the neighborhood of 5 whenever our course starts on Saturday. Like, so to show that my sequence is converging, first of all we have to find a point x. हमें देखना पड़ेगा भी हमारा किस पॉइंट को कन्वर्जेंट हो रहा है. So I am modifying the definition. That means there exists x belongs to R. क्योंकि किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, देन दिस विल हैपन, राइट? तब ये हमारी चीजें शुरू होंगी. ठीक है. नाउ लेट अस सी वन मोर diagram of convergence to elaborate the convergence, what convergence is. Now we are making a diagram. हमारे पास सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रहा है एल को. वी विल राइट लाइक दिस. हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है तो हम इस तरह से लिखेंगे. तो यहाँ पर सीक्वेंस जो है एक्स एन, वो किसको कन्वर्ज कर रहा है? वो कन्वर्ज कर रहा है एल को, राइट? सो हम ग्राफ बना चुके हैं, काफी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट? सो अलोंग एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग ए नेचुरल नंबर. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, and continuing this way, I am saying my sequence is converging, right? So this is n, n plus 1, n plus 2. So my sequence is converging to L. तो ये जो L है ये कहाँ होगा? This is over along
y axis. So this is my L. So how can I say my sequence is converging to L? That means for any epsilon positive. So what is epsilon? This is over positive number. So I will take the neighborhood of L. This is over L plus epsilon, and this is over L minus epsilon. So this is my L plus epsilon, and this is my L minus epsilon, right? Now for n is equal to 1, जब हमारा n 1 है तो मान लो भी हमारा x1 यहाँ पर है. जब n 2 है तो मान लो हमारा जो x2 है वो यहाँ पर है. जब n 3 है मान लो हमारा x3 यहाँ पर हो गया. x4 है मान लो हमारा x4 जो है वो यहाँ पर आ गया, राइट? जब हमारे पास x5 है सो इट्स लाइक दिस. जब x6 है, राइट, सो इट्स लाइक दिस. इस तरह से हम चलते जा रहे हैं, राइट? इस तरह से हम चलते जा रहे हैं, राइट? दिस इज माई L, दिस इज माई पॉइंट L. This is L minus epsilon. It's the neighborhood of my L. So what happened after some time? कौन सा टाइम? n टाइम के बाद सीक्वेंस की हर टर्म इस जो हमारे पास स्ट्रिप है इसमें नजर आएंगी, राइट? सीक्वेंस की हर टर्म कहाँ नजर आएंगी? इस स्ट्रिप में हमारे पास नजर आएगी आफ्टर दिस n ऑनवर्ड्स. ठीक है, कोई भी टर्म जो है अगर हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है L को तो कोई भी टर्म इस स्ट्रिप के बाहर नहीं जाएगी आफ्टर दिस n. इस n के बाद सीक्वेंस की हर टर्म इस स्ट्रिप में हमें नजर आएगी. सो इफ दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू, थिंक फॉर 15 सेकेंड एंड देन रेज योर हैंड. अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है देन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज अनम्यूट योर माइक एंड डिस्कस विद मी. जी नरेश कुमार. नरेश कुमार. यस सर. यस बेटा, समझ आ रहा है आपको? यस सर. ओके, गुड. तो मैं एक और थोड़ा एग्जांपल बताऊंगा बिकॉज दिस इज समथिंग आपको जो है चीज जो है समझ आनी चाहिए, उसी के बाद हम आगे चल सकते हैं. कन्वर्जेंस की एक और डेफिनेशन हम इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे हिमाचल में काफी जो है वो मेले लगते हैं. तो एक हमारे पास कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई एक गांव है उसमें मेला लगता है, राइट? सो व्हाट हैपन, किसी दिन मेला है, किसी टाइम पर सब लोग जाते हैं वहां पर पूजा अर्चना करते हैं या जो भी है, राइट? मान लो 4 बजे जो है वो मेला शुरू होना है. तो क्या होगा भी, जब हम उस मेले की तरफ अप्रोच करेंगे, राइट, तो पहले हमें थोड़े लोग दिखेंगे. शुरू शुरू में हमें जो मेले से जितनी दूर हम होंगे उतनी दूर हमें जो है वो दूर दूर लोग दिखेंगे. पर जैसे ही हम मेले के पास पहुंचते जाएंगे कुछ समय के बाद हमें क्या दिखेगा कि हमारा पूरा गांव जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास नजर आ रहा है, राइट? दैट मीन्स वी आर कन्वर्जिंग टू दैट फेयर, और दैट जो हमारा मेला है उसकी तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं. सो यू कैन थिंक लाइक दिस आल्सो. ये है हमारे पास कन्वर्जेंट का कंसेप्ट. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. अब उस वहां जाने से पहले, एग्जांपल्स में जाने से पहले दो चीजें हमें चेक करनी बड़ी जरूरी है. एक तो हम सबसे पहले पॉइंट ढूंढेंगे. हम अपना जो जो सीक्वेंस है किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है उसको थोड़ा सीखेंगे भी. ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है. दैट मीन्स वी मेक ए गेस फॉर द लिमिट.
किस पॉइंट की तरफ ये मूव कर रहा है, हम गैस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, हम फिर एस्टिमेट करेंगे, हम अपने सीक्वेंस को और हम अपने सीक्वेंस और वो जो पॉइंट हमने गैस किया है उसको एस्टिमेट करेंगे, राइट, फॉर एनी एप्सिलॉन, किसी भी एप्सिलॉन के लिए हम उसको एस्टिमेट करेंगे, राइट। हमें यू गिव मी एनी एप्सिलॉन एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द पॉइंट दैट एन, किस एन के बाद जो है हमारा ये जो सीक्वेंस है ये एक्स की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स द एस्टिमेशन शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये दो चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। पहला, हम गैस करेंगे, ठीक है, हम अपने सीक्वेंस को ऑब्जर्व करेंगे, गैस करेंगे, और दूसरा हम देखेंगे भी ये कैसे अपने पॉइंट को ये कन्वर्ज कर रहा है, कैसे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स। तो मैं शुरुआत करता हूँ कन्वर्जेंस की एग्जांपल्स। तो पहली जो एग्जांपल है, जो हमने कांस्टेंट सीक्वेंस पढ़ा है, तो उसके बारे में देखेंगे। लेट सी बिलोंग्स टू आर, मैंने एक सी लिया जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, एंड व्हाट इज आवर सीक्वेंस, एक्स एन इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एन। आप कोई भी एन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा, यस। तो हमें सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करनी है, यस। कैन यू गेस भी ये सीक्वेंस किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, कैन यू गेस, द फर्स्ट पॉइंट इज वी विल गेस। कोई बता सकता है भी ये किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, कांस्टेंट सीक्वेंस? जी, 4 हाथ खड़े हुए हैं। 5वां रोहित ठाकुर। जी, विवेक। सर 2 को। 2 को, यहाँ पे 2 बेटा आपको कहाँ नजर आ रहा है? सर सी। सी को, सी को सर। ओके। तो रोहित ने गैस किया भी ये सी को कन्वर्ज कर रहा है, राइट। इनका गैस ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, राइट, वी आर गेटिंग अ सी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नाउ वी विल सी द गैस। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, हमने गैस किया भी ये सीक्वेंस किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो हमने गैस किया भी ये सी को कन्वर्ज कर रहा है, रोहित ने बताया। नाउ सेकंड पॉइंट इज वी विल एस्टिमेट this for any epsilon positive. For any epsilon positive, we have to estimate this. So what it should be? Yes, Aryan. So it is going to be less than epsilon. What is the value of this xn minus c? So it would be xn plus c. Why? The sequence is constant. You take any n, I am getting c again. So what is the difference between x and c? It must be 0. Yes, it will be 0. 0. What? Yes, Ashish. क्या आर्यन ठीक बोल रहा है? Yes, sir. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई भी एन लूं, कोई भी नेचुरल नंबर लूं, आई एम गेटिंग सी अगेन, राइट, माई एक्सन इज माई सी, सो आई एम गेटिंग 0, and because over epsilon is greater than 0, right, so of course this is less than epsilon, the estimate is less than epsilon, and this is true for all n. You take any n, you take any natural number, this is true for all n. So how will I write? I can take my n is equal to 1, right? So if you take 1 onwards, you can take any number. You take x1, you take x2, you take x3, right? All these values, and the difference between c, the estimation between c and xn, always comes out to be 0, and 0 is less than epsilon because we are selecting epsilon like this. So if somebody give me epsilon, any epsilon, right? If somebody give me any epsilon greater than 0, right? What should I write? There exists n. And what is
we are taking n here, you can take n1, right? There exists n belongs to natural number, and what is happening? Such that for all n greater than equal to 1, अगर आप n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा लेते हैं, so what is happening? Mod of xn minus c is less than epsilon. Because this mod of xn minus c is 0, so I can write it as 0, and 0 is always less than epsilon because our assumption is like that, right? So if this result is clear to all of you, then please raise your hand. Think 10 seconds before raising your hand. तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है सी को, क्योंकि मैं कोई भी एप्सिलॉन लूं, मेरे पास एक n आ रहा है. यू कैन टेक n1, you can take any natural number, you can take n 100 also. After that 100 also, the difference between xn and c is less than epsilon. So if it is clear, raise your hand quickly, then we will proceed to our example number 2. Okay, so 25 are raising their hand. Okay, it's a good figure to me, right? So listen the lecture very carefully, because if you take 40% or 30%, it's very good. Now let us see one more sequence. Consider a sequence xn, and where xn is equal to 1 by n. Now I am considering this sequence. Xn is 1 by n. So what is my x1? Yes, can anybody tell me what is x1? Vivek. 1. x2? Sir, 1 by 2. x2 Vivek. 1 by 2. Sir, 1 by 2. x3 बोलते जाइए. 1 by 3. 1 by 3. Sir, 1 by 3. x4. 1 by 4. So can you guess भी ये sequence किसको कन्वर्ज कर रहा है? सबसे पहले हमें guess लगाना है. Yes Vivek, can you guess? सर नहीं पता लग रहा है मुझे. ये सीक्वेंस आपने बताया, सीक्वेंस है 1, यस सर. 1 by 2, 1 ऐसे by ही बता 2. रहे ना? 1 by 3. यस सर. 1 by. आपको क्या लग रहा है अभी ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? क्या आप इसकी लिमिट गैस कर सकते हैं? सर 1 से छोटा होगा ये. हाँ, किस तरफ जा रहा है? If I draw a diagram, so this is my 1, this is 1 by 2, यस सर. this is 1. तो किस पॉइंट की तरफ सर ये मूव कर रहा है? सर 0 से बड़ा होगा. और यस, 0 से बड़ा होगा. यस तो सर. किस पॉइंट को ये कन्वर्ज कर रहा है? किसके पास जा रहा है? धीरे धीरे किसके पास जा रहा है? सर 0 की तरफ. यस, 0 की तरफ. ओके, पूजा कुमारी 21 MA005. पूजा कुमारी. यस सर. बेटा क्या लगता है आपको भी ये क्या लिमिट होगी इसकी? सर ये अप्रोक्सीमेट 0 है, 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन और इक्वल टू. तो ये किस तरफ मूव कर रहा है सीक्वेंस? सर ये 0 की तरफ मूव कर रहा है. 0 Sir, it will राइट. convert to तो 0. ये हमारा गैस है, राइट? विवेक ने भी यही गैस Yes. किया, और ये दिख रहा है हमें. पहले n को 1 पुट किया, 1 by 2, 1 by 3. सो ये धीरे धीरे जो है वो 0 की तरफ मूव कर रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपने गैस करना है, भी ये कहाँ मूव कर रहा है. नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग? क्या चीज हमें सेकंड चेक करनी है? फॉर एनी epsilon greater than 0, what we have to check? जी आशा देवी 21 CS025. सर उनका एस्टिमेशन लेना, मतलब मोड. इनका जो है एस्टिमेशन लेना है. xn माइनस what should I write here? सर ये आशा 0 की देवी. तरफ, सर 0 की तरफ जा रहा है तो 0.
0. What is over xn, आशा? xn क्या है? सर एक्सएन 10 मतलब सर वो एक्सएन 0 की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, एक्सएन इज What is इक्वल टू over 1 बाई xn? एन, 1 1 by बाई n. एन। Very good. So 1 by n minus 0, I am getting 1 by n because this is a positive number. So what I have to do, I have to make this thing less than epsilon, right? मुझे इस estimation को epsilon से छोटा करना है, ठीक है? कुछ मुझे n ढूंढना पड़ेगा. That means we have to find n. We have to find n such that after that n, उस n के बाद क्या हो, ये हमारा एस्टिमेशन जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, राइट? एंड व्हाट इज ओवर एस्टिमेशन? दैट इज 1 बाय n. और मुझे क्या करना है, इसको एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ करना है, ठीक है? ये एक्सप्रेशन समझ में आया बच्चों सबको? रेज योर हैंड. ओके, सबको समझ में आ गया लगभग? ओके, गुड. अगर आपको समझ में आ गया देन इट्स वेरी गुड. मैंने जो आज आपको पढ़ाया है, मैं मानूंगा मेरी मेहनत जो है वो सक्सेसफुल रही, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है. सो पहले हमने लिमिट को गैस किया, तो दो बच्चों ने कहा सर ये 0 की तरफ मूव कर रहा है, सो आई विल गैस द लिमिट. नेक्स्ट स्टेप इज फॉर एनी एप्सिलॉन आई हैव टू एस्टिमेट द डिफरेंस. सो आई एम टेकिंग द डिफरेंस एज xn minus 0 because 0 is over limit. What is xn? xn is 1 by n, so I am getting 1 by n. And I have to check that ये जो 1 by n है ये एप्सिलॉन से छोटा होता है, क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है? इज दिस थिंग हैपन? क्या ये चीज होती है? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 by एप्सिलॉन लेस देन n. ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 by n लेस देन एप्सिलॉन की जगह 1 by एप्सिलॉन लेस देन n. यस, वी कैन राइट. नाउ थिंक, अब जो 5 पॉइंट हमने शुरुआत में पढ़े, हमें एक ऐसा n एग्जिस्ट करवाना है, एक ऐसा n एग्जिस्ट करवाना है जो 1 by एप्सिलॉन से बड़ा हो. तो ये चीज हमें कौन बताएगा? कौन हमें ये चीज बताएगा भी देयर एग्जिस्ट n such that n is greater than एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. तो हमें कौन बताएगा भी देयर इज n such that n is greater than 1 by एप्सिलॉन? ये कौन बता रहा है हमें? यस, रोहित ठाकुर. सर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी. वेरी गुड, वेरी गुड. खुश किया आपने अगर आपने ये बता दिया. तो ये जो चीज है, साहिल कुमार आपका क्या कहना है? सर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हो जाएगा. वेरी गुड. सो आई एम लॉजिंग द हैंड क्योंकि बाकियों का भी आंसर वेरी गुड, 4 लोगों का आंसर आया. सो ये हमें चीज कौन बता रहा है? ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, जो आज शुरुआत में डिस्कस करी. सो सी, फॉर एनी x ग्रेटर देन 0 देयर इज नेचुरल नंबर n such that n is greater than 1 by x. So in place of x we have epsilon here, right? So if we take any epsilon greater than 0, by Archimedean property 3 there is some n such that n is greater than 1 by epsilon, right? So by using Archimedean property I can say that if I choose a natural number n which is greater than 1 by epsilon, then I can write that, now I am going to write, for every epsilon positive, right, there exists natural number n. ये कहाँ से आया? Archimedean property से आया, right? Such that for all n greater than equal to capital N, अगर n कैपिटल n से बड़ा है, so what will happen? 1 by n जो है वो किससे छोटा होगा? 1 by कैपिटल n से. जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं इनइक्वालिटी चेंज होगी. एंड व्हाट इज दिस 1 by n? 1 by n जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है. अगर आप इसको देखें, सो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 by n.
So this is less than epsilon. और जब ये 1/n less than epsilon है, this is nothing. This is over estimation. So I can write for all n greater than equal to n. What will happen? My mod of xn minus 0 is, which is 1/n, which is less than epsilon. तो ये हमारी जो है कन्वर्जेंस, यहाँ पर इसका प्रूफ खत्म हुआ विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. इसको 15 सेकंड तक देखो जो मैंने लिखा है. सोचो, दो चीजें जो है हमें चेक करनी है. पहले हमें लिमिट गैस करनी है, राइट. उसके बाद हमें एस्टिमेशन देखना है फॉर एनी एप्सिलॉन, राइट. एस्टिमेशन में क्या देखना है भी, क्या ये किसी नंबर के ऑनवर्ड्स, क्या मैं कोई नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ एन जिसके बाद हमारी एस्टिमेशन एप्सिलॉन से छोटी है. इफ आई एम एबल टू फाइंड दिस देन माय वर्क इज ओवर. हम अपने जो निष्कर्ष है उस तक पहुंच जाएंगे. यस, सी दिस फॉर 15 seconds and if you have any doubt then please let me know. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस. और भी हमारे पास काफी सारी एग्जांपल्स हैं. आई विल रिक्वेस्ट दैट यू शुड गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स, और वहां पर आपको बड़ी सारी एग्जांपल्स दिखेंगी. आप इस तरह से सोचिएगा कि पहले हमें लिमिट गेस करनी है एंड देन वी हैव टू एस्टिमेट द थिंग्स. नाउ इफ ए सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, राइट, if a sequence is not convergent then we call it as a divergent sequence. हम उसको divergent sequence बोलते हैं. So now I am giving you the homework. आपने divergent की definition जो है वो सोचनी है भी क्या होगी, और उसको quantifiers की फॉर्म में लिखना है. So write sequence, divergent sequence in terms of quantifiers. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क है आपके लिए. सेकंड है, हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था xn जिसमें xn की वैल्यू थी -1 की पावर n. ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है. तो आप सोचिएगा भी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट क्यों नहीं है. एक और सीक्वेंस हमने पढ़ा था रिमाइंडर वाला, जिसमें रिमाइंडर जो है वो 5 से डिविजिबल करके n को 5 से डिवाइड करते थे और जो हमारा रिमाइंडर आता था. So that sequence is also not a divergent or not a convergent sequence. ये जो प्रूफ है ये आप देखिएगा. एंड थर्ड जो मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारा सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट को L को, तो हमें प्रूफ करना है भी ये जो L है ये यूनिक होगा. वैसे इसमें बड़ी सारी चीज़ें बताने वाली हैं बट टाइम इज नॉट अलाउइंग मी. So I am giving you as an homework because you have a long week ahead. तो आप ये सारी चीजें सोच सकते हैं and you can post your queries on through email or through Google Classroom or through WhatsApp, whatever the way you like. आप इसमें जो है queries जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. तो ये चीजें देखिएगा. एक तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है वो आप क्वांटिफायर्स की टर्म में लिखिएगा. कैसे हम लिख सकते हैं, you will find the definition as very easy क्योंकि हमने quantifiers को बड़ा स्टडी किया है. फिर ये एग्जांपल्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके बारे में दो सीक्वेंस हमने देखे जो कन्वर्जेंट नहीं है. आप चेक कीजिएगा जब आप क्वांटिफायर्स की फॉर्म में लिख लेंगे. एंड द लास्ट वन इज कि हमारा अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट को, तो ये जो हमारी लिमिट है दैट इज यूनिक. सो सुनील सर, are you with us? Yes, Rohit sir. Yes. So I think sir I should stop here.